نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلى يوم الدين. So one of the most popular surahs in the सूरत अल और उसका जो बिगिनिंग है ना उसको अगर हम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रहमान so Allah subhanahu wa ta'ala is telling us what is his ultimate mercy by choosing this name of his and attribute of his and then he says Allama al-Quran. So the first thing we're listening to is Allama, learning. And that according to scholars tells us कि हमारा दुनिया में आने का जो बहुत बड़ा मकसद है ना till we are alive is learning. ठीक है और फिर खास तौर पे अल-कुरान which you are here for and I'm hoping and then خلق الإنسان so Allah created humans and this is the part I want you to look at the last part Allamahul Bayan. So what is bayan? Bayana, explanation. Bayana, bayan is something that becomes clear. बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है. Connect it now, this word to what you are doing with your phone. Any age, any stage, what are you doing with your phone, your laptop, your iPad, जिस भी चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ओके इसको कनेक्शन को जहन में रखिए लफ्ज आता है मीडिया एंड वी टॉक अ लॉट अबाउट मीडिया एंड टुडेज टॉक इज आल्सो अबाउट मीडिया तो मीडिया क्या है मीडियम होता है जब एक चीज दूसरे के लिए बीच में मीडिएट करती है यानी इंफॉर्मेशन एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जाती है ठीक है So media is the plural of that. So you've heard elders saying media ने बहुत खराबी की मीडिया ने सब कुछ खराब किया ठीक है मीडिया को समझना जरूरी है कि मीडिया एक्चुअली है क्या सो अगर आप काइंड्स ऑफ मीडिया देखते हैं तो सबसे जो इस वक्त पॉपुलर है दैट इज द वेब मीडिया whatever you're seeing on the internet, whatever is coming to you through YouTube. Then there is print media. You must have seen throughout. अब इतना नजर नहीं आ रहा. Even older people have started reading news online, but print media होता. And print media would mean magazines, newspapers, ये सारा media के अंदर आता है. Broadcast media, it can be radio, it can be television, whatever is being broadcast. And then there is shared media, which is social media, and that's where all of us step in because somehow all of us are contributing to it. Whether you're an influencer or not, चाहे आपका अपना इंस्टा चैनल या स्नैपचैट पे या आपका टिकटॉक है या नहीं है आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं even by forwarding which is why another name for social media is shared media इसमें मैं और आप सब शामिल हैं क्योंकि रेटिंग्स की बेसिस पे मीडिया वर्क करता है आप क्या लाइक कर रहे हैं आप क्या डिसलाइक कर रहे हैं ये सारा कुछ इसमें शामिल कैटेगरीज के हिसाब से अगर हम देखें तो मीडिया अकॉर्डिंग टू पर्पस मकसद क्या है सो न्यूज मीडिया is what you usually see on television you see your elders watching you see yourself watching if you are somebody who's into the news and then there is entertainment and somewhere the lines blur so for example influencers या जो लोग Instagram पे popular हैं, they started with entertainment media, but then the Gaza thing happens, and they start using their entertainment accounts with a lot of followers
to give you news. And that is where something comes in which we all knowingly or unknowingly are doing. हम सब कर रहे हैं, हमें पता हो या ना हो, वो है citizen journalism. हम बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, वो अभी बारिश हुई, वो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, ओ बिल्ली के ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, ओ यहाँ पे देखें ये फलां दुकान की सेल में इतनी ज्यादा रश है, लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हम ले रहे हैं। चाहे या ना चाहे हम सब मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। डज इस्लाम से एनीथिंग अबाउट इट? क्या कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए या है? So we start with what the Quran and Hadith tell us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and this is a Hadith from Muslim, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayra." He who believes in Allah and the last day, उसको क्या करना चाहिए? Should either speak good or remain silent. जब आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आप और मैं कुछ बोल रहे हैं. We are saying something. So for example, a friend of you has put up something, you like it. Yeah? You put a heart on the Instagram. क्या आपने कुछ कहा है वहां? कहा है. आपने कहा है मुझे पसंद है. ठीक है? You've kind of voted. So in that sense, social media is very democratic. आपकी likes, dislikes पे सारी चीज बेस हो रही है. Okay? हो सकता है एक कोई ऐसी चीज आपने लाइक की जो कि आप खुद तो नहीं करते, मगर आपने लाइक कर दिया क्योंकि कहीं अंदर आपके वो ख्वाहिश है कि काश ये चीज मैं कर रही होती. So that is how it is all interconnected, and that is how we are constantly saying something. Then there's another hadith by a Muslim that it is enough for a man to prove himself a liar when he goes on narrating whatever he hears. एक इंसान के झूठा होने के लिए ये काफी है कि वो हर वो बात आगे पहुंचा दे जो वो सुनता है. As Muslims, we have been told, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." You're the best community ever raised for humanity. You encourage good, you forbid evil, you believe in Allah. Had the people of the book believed, it would have been better for them. Some of them are faithful, some of them are rebellious. So this is Surah Al Imran. Similar feeling is from Surah At-Tawbah, Ayah 71, as you can see. तो हमें पता चल गया हमारा आने का एक मकसद है. So you were doing Surah Al-Mulk, yeah? And with Surat Al-Mulk, you were seeing Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. आने का जिंदगी में मकसद हमें बता दिया. जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना that there is a purpose for me to come into this world, that means we are accepting everything I do, everything I own, every step I take. This has a purpose, is going somewhere. Now, switch. Let's come to me and you and today's work. What are the social media platforms you're using? So we will take a quick look at some of the findings जो कि इंटरनेट पे आपको मिलती हैं. Facebook wider outreach है. क्यों wider outreach है? It might not be so well modern for the Gen Z. हमारे बच्चों के लिए या आप लोगों के लिए इतना Facebook it thing नहीं रहा है. But that's where it all started. वाइडर आउटरीच इसलिए है कि गांवों में, छोटे शहरों में हर जगह फेसबुक अभी भी ज्यादा चलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में अभी भी ज्यादा चलता है.
Twitter, which is now X, किस चीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है? So that was supposed to be the intellectual platform, still is. कोई खबर सबसे पहले ब्रेक होती है, वो ट्विटर पे ब्रेक होती है. अगर आपको कहीं पता करना हो, फर्स्ट प्लेस इज ट्विटर. पाकिस्तान में इस वक्त वो वीपीएन के बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते. व्हाट्सएप सबसे ज्यादा ग्रोइंग फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज हमारे हाथ में एक चाबी का गुड्डा आ गया है. जो चाहे हम भेजें, जो चाहे हमें कोई और भेज दे. Essentially started out as a messaging service, जैसे फेसबुक मैसेंजर था. It started as that. फिर इतनी ट्रैवलिंग है और लोगों के इतने बहन भाई बच्चे बाहर हैं, फ्री कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. उसके बाद हमने कहा वाओ, हम तो इससे डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, तस्वीरें भी भेज सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, 15 मिनट का वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इससे. So it became social media. So anybody who tells you that WhatsApp is not social media, they are wrong. केस इन पॉइंट सबसे बड़ी इसकी मिसाल ये है, व्हाट्सएप में अब स्टेटस वाला ऑप्शन है, विच मीन्स आप कोई भी चीज ऊपर डाल सकते हैं और 24 घंटे में इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह डिलीट हो जाएगी. वेब गूगल सर्च बेसिकली इट्स अ रिसर्च टूल, उसके बगैर काम नहीं हो सकता. And Instagram. I've not put TikTok and Snapchat here because I don't promote it. But well, it's used and it's used for very good things as well. Please remember कि social media के कोई खिलाफ या in favor of as such नहीं हो सकता. It's how you use it. So, Subhanallah, again the example of the whole Palestine issue, how beautifully social media was used. हो सकता है कोई आपको कहे आप चीजें बॉयकॉट करते हैं, मगर देखें आप गूगल और फेसबुक तो नहीं बॉयकॉट कर रहे हैं. सुना है ये आपने? Well, what if you are using their very tool for your purpose and cause? That's what has been done and very intelligent. आप सल्लल्लाहु के ज़माने में, in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there would be wars. After the wars, if you inherited spoils of war, माले गनीमत मिलता था, so there's a sword or there's an arrow, you don't say this belongs to the Quraysh, you use it. You got it. You got it, you use it for your purpose. So that example doesn't apply over there. Okay. I read a quote when I was researching for this, and it was very, very interesting. Life is getting in between me and social media. जबकि actually उलट होना चाहिए. Social media is getting in between me and life. But guess what? अब ये life बन गई है. Average बंदा 24 hours में से world over बहुत बड़ी, so 28 to 30% of our time goes on phones. Any age, any country. You can see, for example, 2022 mein, the source is all there. So TikTok was the fastest growing. There's Netflix, then there's YouTube. Disney we boycott, Amazon we boycott, and so many others we boycott, but you can see के growth क्या है. Okay. Most used social media platforms, and this is from as an example because पाकिस्तान में तो डेटा बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो हमें पता नहीं चल रहा होता. हम लोग दबा के यूज करते हैं. आपको गांव से लेके शहर तक सारे पाकिस्तानी. But remember, we are smarter than you. You know why? We didn't grow up as Gen Z. We didn't grow up with these things around. We had to learn from writing to this. So this is smart as well. Anyway, this is something from the Kingdom of Saudi Arabia. So taking a Muslim country as a case in point, WhatsApp सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, of course. Then it's Instagram, then it's Snapchat, then it's Twitter, then it's TikTok. And this is people in the millions who are users on it.
So see, Facebook नीचे slide down हो रहा है. Anybody knows what this is after Facebook? शाबाश, Telegram. WhatsApp टाइप है. जब आप बहुत थक जाते हैं कि लोग WhatsApp पे भेजे जा रहे हैं चीजें, तो हम में से कुछ लोग चुपके से खास लोगों के साथ टेलीग्राम पे मूव हो सकते हैं. फेसबुक मैसेंजर, पिंटरेस्ट, जिसने ख्वाब दिखाए हैं कि मेरा कमरा ऐसा, बेसिकली सारी चीजें ख्वाब दिखाती हैं. ओके. एंड लिंक्डइन. Okay. Kingdom of Saudi Arabia social media users by year. So you can see simple 2014 में 7.6 million users थे. By 2023 it's 28.8 million. That's how fast it's growing. Okay, अब हम आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक की तरफ आ रहे हैं. ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं. सो सोशल मीडिया, ये यूएसए के स्टैट्स हैं. सोशल मीडिया की वजह से 2019 और 2020 में एक साल में ही फर्क आप देखना शुरू कर दें. You can see how socializing and communicating goes down because of increased usage of social media. Relaxing and thinking कितनी कम हो गई, रीडिंग तो बिल्कुल ही गई, एंड बाकी चीजें जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज एक्चुअली काइंड ऑफ द इंक्रीज. Playing games and computer use for leisure, you're seeing almost 38% difference आया उन दोनों चीजों में. We'll keep shuffling between what Islam says and what's happening on social media. आज के दौर में क्या हो रहा है, हम यही बात कर रहे होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र. So what is wal asr? This is the surah. Sahaba मिलते थे, हाथ मिलाते थे एक दूसरे से, and they would just recite this surah to each other. There have been scholars who have said, if you understand this surah, you've understood deen. Wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by time. So time. That's our key over here, usage of time. The Prophet ﷺ says in a hadith in Bukhari, Ni'matan. There are two ni'mas, दो ऐसी blessings हैं, दो नेमतें हैं. There are two blessings which many people waste, health and free time. बहुत जल्दी चली जाती है. अभी वो जो एक घोड़ा है ना, वो तेज चल रहा है अगर आप यंग हैं, हेल्थ का घोड़ा. फिर 30s हिट करते हैं. फिर जिनको हम अंकल आंटीज कहते थे, हम खुद वो एक वक्त आता है वो अंकल आंटीज बन जाते हैं, है ना. So this is how fast it moves, and these are the two blessings we don't take care of enough. सोशल मीडिया के इस्तेमाल से या फोन के इस्तेमाल से क्या क्या चीजें हैं जो फिजिकली हमें इम्पैक्ट कर. सो मुस्तकिल फोन है. इट डजेंट मैटर आप लैपटॉप पे हैं या आईपैड पे हैं या सैमसंग टैबलेट पे हैं या आपका कौन सा फोन है. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. सबसे पहली चीज, ये आपको पता होगा, आपने सुने होंगे, आपने हो सकता है फॉरवर्ड भी कर दिया व्हाट्सएप पे, वो चार्ज हो रहा था, बेड के पास उसको फोन रखा हुआ था, पटाखा हुआ, फला फला. एक तो बगैर चेक किए फॉरवर्ड ना, पहली बात. दूसरा ये रेडिएशन एक्सपोजर इज रियल. इट इज प्लेइंग विद योर ब्रेन सेल्स. सेकेंड, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन. चीजों की अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस अफेक्ट हो रही है. अगर नहीं अफेक्ट हो रही तो सच बताएं, पहले फोन्स के नंबर्स लोगों के याद रहते थे. पहले स्पेल चेक पे रिलाय नहीं करते थे, स्पेलिंग्स याद होती थी. पहले आप खत खुद लिखते थे. सो आपकी इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव, आपका ब्रेन फंक्शन बेसिकली अफेक्ट हो रहा है. थर्ड, स्लीप डिस्टर्बेंस. ये किस किस के साथ नहीं हुआ है कि रात को आपने सोचा आज मैं 11 बजे सो जाऊंगी, तहज्जुद पे उठना है, मैंने सुबह उठा, एंड देन द रील्स हैपन.
This is all ages. This is people sitting in the back rows or the front rows. Increased stress levels. So, guess how this happens? What social media or media does is it gives you the false feeling that you are very important. यानी हमें हर वक्त एक ये एहसास देता है कि हम बहुत अहम हैं, हर वक्त किसी को मेरी जरूरत हो सकती है, हर वक्त मुझे फोन हाथ में रखना है, हर थोड़ी देर में मुझे चेक करना है, मैं किसी के साथ डिनर या लंच पे भी गई हूँ या मैं गपशप भी कर रही हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में देखना है क्योंकि मैं बहुत अहम हूँ, हो सकता है मुझे किसी ने याद किया. When nobody remembers you, nobody likes your thing, stress levels are increasing. Am I lesser than her? उसके इतने लाइक्स क्यों हैं? सो इमेजिन इससे पहले इस छोटे से तरह एक फ्री जिंदगी थी. नाउ यू constantly conscious. Okay, physically again, eye strain and vision problems very real. It's happening. Neck and back pain, increased risk of accidents. Why? मोटरबाइक चला रहे हैं तो ये हो रहा है. बाय द वे, कॉग्निटिव फंक्शन और इंटेलिजेंस की डम्बिंग डाउन में एक और चीज शामिल है. रास्ते नहीं याद हमें, गूगल पे रिलाय कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं. वेरी पेनफुल इज फ्रॉम वेरी स्मॉल एज if you hand over these gadgets or gizmos to young children, उनकी cognitive abilities, उनकी intelligence बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है. दे लिव इन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, वो उसी तरह बोलना शुरू कर देते हैं, रियलिटी से उनका ताल्लुक नहीं होता, उनका ईक्यू मुतासर. वर्चुअल ऑटिज्म, which means children are so booked with that. अच्छा, क्योंकि माँ भी लगी हुई है ना, तो उसको भी तो टाइम चाहिए, तो वो उसको भी एक चीज पकड़ाएगी और वो खुद भी एक चीज पकड़ेगी, एंड दे आर इन डिफरेंट वर्ल्ड्स. ओके, डिक्रीज्ड सोशल स्किल्स जो आप बात कर रहे हो, वर्चुअल ऑटिज्म, एडिक्शंस. This is a very bad addiction, and then it actually, there are researches that it leads to substance abuse, poor academic performance, deeper impacts. Attention span बहुत कम है हमारा, because हम एक virtual world में हैं. We are easily bored with humans, because अपनी मर्जी की किसी भी चीज पे आप जा सकते हैं ना, प्रोमोट करके. तो आज इंसान के साथ तो आपको पहले बात करनी पड़ती है. They're sometimes interesting, they're sometimes not interesting. That's how it is. So in earlier times when this was not there, you would make conversation. Now you don't make conversation. So impaired conversation skills. There is increased individualism. इसका मतलब है अपनी शख्सियत के पोल के अंदर हम जाते चले जा रहे हैं. Impolite behavior. So morally, ethically भी problem है. आपको पता है in certain countries in the world, not that they are ideals, but it's considered extremely rude and uncivilized to check your phone while you're having a conversation, or you're at a meal, or you're socially there. We are constantly doing that. Dumbing down, I already spoke about in multiple ways. Not writing messages yourself is a big problem. आपकी eventually vocabulary, mental skills slow down होना शुरू हो जाएंगी. रिसर्च के लिए भी आप सिर्फ उसी पे रिलाई कर रहे हैं. Memory is impacted, of course, because the mind is a muscle. ठीक है, जितना आप यूज करोगे उतना वो अच्छा चलेगा. रिलेशनशिप इश्यूज, अफेयर्स, बोथ इमोशनल एंड फिजिकल. सो चैट हाथ में है, इट्स अ मैरिज, you're saying, oh, I never really had that kind of an affair with somebody, but guess what, real life can be boring, and उसमें relationships में problems हो सकती हैं. जबकि ऑनलाइन अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं, यू बोथ आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. ऑल्सो बिफोर मैरिज यू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स. सो थिंक अबाउट जो मंगनी का टाइम होता है या कोर्टशिप का टाइम होता है, नॉट encouraging that now, Govilla, I'm stating an example. उसमें you are somebody else. On
chat, you're somebody else. आपकी तस्वीर फिल्टर्ड है, आप पतले ज्यादा लग रहे हैं, आप खूबसूरत ज्यादा लग रहे हैं, आपके चेहरे की लाइंस भी नजर आ रही हैं, या you're more interesting, and so all of this is happening. There is also isolation, depression, anxiety. बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, पेरेंट्स भी अपनी दुनिया में घुसते चले जा रहे हैं, वो भी अब आप में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे. They have to pretend because that's their job, but they are not that interested. And narcissism. Narcissism बेसिकली क्या है? जो नरगिस का फूल होता है जो अपनी तरफ ही देखता रहता है, हाँ. So narcissism is basically me, myself, I. Okay. When you're constantly on social media, आप सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, मेरी सोच, मेरा ख्याल, मुझे ये अच्छा लगा, मैं. Narcissism, big problem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in this hadith narrated by Abdullah bin Amr ibn al-As, said, "O Abdullah, have I not been informed that you fast all the day and stand in prayer all night?" So this is a Sahabi जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु को इंफॉर्मेशन दी गई कि ये मुस्तकिल रोजे रखते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं. So his family life was getting affected. I said, "Yes, O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, how beautiful is the honesty, huh?" He said, "Do not do that." Keyword, buzzword in this hadith, balance. Observe the fast sometimes and also leave them at other times. Stand up for the prayer at night and also sleep at night. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. So indeed your body has a right over you. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Your eyes have a right over you. उनको सोना है, उनको अच्छी चीजें देखनी है. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. And your wife or your spouse has a right over you. And this is a hadith from Bukhari. How relationships get affected with social media. Your connection with Allah gets affected first and foremost because टाइम कम है ना जिक्र के लिए, कुरान पढ़ने के लिए टाइम कम होता जाएगा. रिलेशनशिप विद स्पाउस गेट्स अफेक्टेड, ये हमने ऑलरेडी अभी बात की है. व्हाई डू वी गो ऑन अबाउट द स्पाउसल रिलेशनशिप एंड मैरिज? हम ज्यादा उसकी क्यों बात करते हैं? प्लीज रिमेम्बर, ये रिश्ता बेस या फाउंडेशन बनाता है ऑफ a society, and that is why in our deen it is so important. So those who've been married 50 years, those who are not married, those who are about to be married, those who are married 20 years, this is for all of us. इस रिश्ते को अल्लाह की खातिर निभाना है और खूबसूरती से निभाना है और मोहब्बत से निभाना है और सब्र से निभाना है और enjoy करके निभाना है. Because this is one of the things that land one in Jannah. You don't do it for that person, you do it for yourself. And if anything is getting in between this relationship, अब इसमें हो सकता है आप ही बोले, well, they don't care about it, they are always on the phone. Time spent with family gets affected. आप genuinely enjoy नहीं करते उस तरह. So for example, if you are a grandparent or a grandchild, आप अनइंटरप्टेड टाइम जो दादी या नानी के साथ बातों में गुजारते थे, अब पीछे समझ रहे, एक एक टिकिंग चल रही है. अभी 15 मिनट से उनके पास बैठी हूँ. आई नीड टू चेक माय फोन. Whether it's this spectrum of age or that, you are not fully in that relationship at that moment. आप अपने पेरेंट्स के साथ भी उस तरह नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी उस तरह नहीं, किसी के साथ उस तरह नहीं, अपने साथ भी उस तरह नहीं. तो ये अफेक्ट कर रहा है. सोशल टाइज, rather watch something at home than go to चाची's house. एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी है, एक अलग दुनिया में हम सब हैं, हर एज के लोग. there's a lot of projects or initiatives about let's plant trees. You're giving back to your community in some way. You're doing amar bil ma'ruf wa nahy anil munkar.
उस सब के लिए हमारे पास, हम कहते हैं, टाइम नहीं है। समर कोर्स में कोई होंगे जो खुद अपनी मर्जी से आए, सुभान अल्लाह। कुछ को अम्मी अब्बा ने जबरदस्ती भेजा है, या बिकॉज कम्युनिटी टाइज के लिए हमारे पास टाइम नहीं। फबिंग पता है? सो दिस इज एक्चुअली इन द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ऑल ऑफ अस आर गिल्टी ऑफ फबिंग, हमें पता भी नहीं हम ये कर रहे हैं। हम हर दफा ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हम दूसरों की चीज चुरा कर किसी और को दे रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली सिनिंग बट वी डोंट नो, वी जस्ट पास ऑन। ये जो अभी बताया ना फबिंग का, so see this hadith by Bukhari and Muslim. The Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when three of you are together, two of you must not converse privately, ignoring the third till the number increases, lest the third should be grieved. अगर तुम में से तीन लोग इकट्ठे हो तो उनमें से दो छुप के आपस में बात ना करें और तीसरे को इग्नोर ना करें, जब तक के लोगों की तादाद बढ़ ना जाए। ऐसा ना हो कि उस बहन या भाई को तकलीफ हो। ओके, हाउ डज दिस बिलोंग टू सोशल मीडिया? आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, वो आपसे बात कर रहा है, आप फोन पे हैं, यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन एंड यू आर विद द थर्ड entity. That goes against the feeling of this hadith. So we discussed how it really it affects the relationships. Yeah. Now, news verification. Fake news सुना है? Fake news की कोई examples दो. Recently कोई fake news आई? Think. Babies were decapitated. बच्चों के सर. So Israel spread that fake news. Okay. Local कोई बताए? Popular political leader released. Popular दाई and इस्लामिक मुबल्लिग, उनको बेचारे कहते हैं मुझे कोई 10 दफा तो मार चुके। But I don't want you to think about those people who are creating in a twisted way this false news. I want to think about you and me. तो ये खबर आई आपके WhatsApp पे, आपने क्या किया? Did you confirm or did you pass on? Push the pause button inside yourself. दीनी एतबार से हम पे कोई फरीजा नहीं है कि हमें हर चीज फॉरवर्ड करना है, ठीक है? बहुत अहम बात यह है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेथ की खबर आई है किसी चीज की, क्या उससे किसी को फायदा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर फॉरवर्ड फिलहाल ना करें जब तक कंफर्मेशन ना हो। नाउ do not spam people's messages, inboxes, everything by just sharing things that's not even true. You're becoming a liar in the sight of Allah. Naudzubillah. ये जो एक अंदर से ख्वाहिश है ना, शेयर में मुझे करना ही करना है, ये थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता। अगर ये बहुत ज्यादा दिल में घोड़ा उठती है तो मुझे शेयर करना ही करना है, करना ही करना है। Check yourself. Maybe you have too much free time. Involve yourself in something productive, please. Otherwise ये आप unavoidably आप करेंगे, because इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसा, कुछ तो करना है, ठीक है? But just look at these ayahs. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु। शुरू में हमने बयान की बात की थी। ओ बिलीवर्स, इफ एन इविल डूअर ब्रिंग्स टू यू एनी न्यूज, वेरीफाई अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। So you do not harm people unknowingly, becoming regretful for what you have done. This is Surah Al-Hujurat, Ayah 6, and there are other verses as well. Usage of time की हम बात कर रहे थे. There's this word called love. So love is basically idle talk, vain talk, वक्त इस्तेमाल हो रहा है
गलत मतलब चीज जिसका कोई फायदा नहीं है एज सच। एंड आई थिंक अगर हम ये समझ जाएं, बरका बहुत ज्यादा होती है। फेक न्यूज की हमने थोड़ी सी बात की, एंटरटेनमेंट की जो हम अभी बात कर रहे थे उससे रिलेटेड है, ठीक है। एंटरटेनमेंट में देखिए आप सूरत अल अनआम की वर्स 32 अगर देखें, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबु व लह, दिस वर्ल्डली लाइफ इज नो मोर देन प्ले एंड अम्यूजमेंट। दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर खेल तमाशा। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून, but far better is the eternal home of the hereafter for those mindful of Allah. Will you not then understand? So फिर सूरत अल हदीद की आया 20 देखिए, अयलमू अन्नमल हयात दुनिया लाइबु व लहव व ज़ीनतुन, खूबसूरती है। एंड दिस इज हमारी जो आगे स्विच करेंगे हम अगेन, जो स्लाइड्स आने वाली उससे रिलेटेड है। वह ज़ीनतुन, ज़ीनत क्या है? ब्यूटिफिकेशन, लग्जरीज, व तफाखुर बैनकुम, mutual boasting, व तकासुर फिल अम्वाली वल औलाद, in competition in wealth and children. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Kamathalin ghaythin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. This is like rain that causes plants to grow to the delight of the planters, but later the plants dry up and you see them withered. सब कुछ eventually खत्म हो जाता है। وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, then they are reduced to chaff, and in the hereafter there will be severe punishment. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, all forgiveness and pleasure of Allah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, whereas the life of this world is no more than the delusion of enjoyment. ठीक है, अब हमें समझ आ गया दुनिया में ये सब जो है एंटरटेनमेंट है, खूबसूरती है, वक्ती है। Mata is something, meme ta'ain is the root. So mata is something which is a benefit or an enjoyment, but it's temporary. Love is anything nonsensical, meaningless, vain, which is in no way conducive to achieving one's goal and purpose in life. उसका basically ना कोई फायदा नहीं हो रहा है। The believers pay no heed to such useless things and they show no inclination or interest for them. तो ऐसे होना चाहिए, ओके। बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे होते हैं वो लाभ में होती है। अपनी शेयर्स को फॉर एग्जांपल देखा करें, उनमें से कौन सी चीज फायदा देती है, किसी और को फायदा देती है या मुझे फायदा देती है, दैट्स द टेस्ट। शेयर तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ओके जी। फाहशा, हाउ इज दिस लिंक टू सोशल मीडिया? मैं कह रही थी ना, बहुत सारी चीजें हम खुद नहीं कर रहे होते हैं बट हम उन्हें लाइक कर रहे होते हैं। And when you press that like button or heart button or you share it or you forward it, so हो सकता है मैंने खुद गाना गाना छोड़ दिया पब्लिक, बट मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है मैं शेयर करूंगी तो अम्मी, मैं अपना नहीं डालूंगी, मैं किसी और का डाल रही हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है? सो फॉर एग्जांपल म्यूजिक इज प्रॉब्लमैटिक इन इस्लाम, वी ऑल नो दैट। You're sharing reels, it's something nice, you took you know वीडियो बाइट इन द गार्डन, अच्छी बारिश हो रही है, बट गेस व्हाट, आपने पीछे गाना लगा दिया। हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस? ये तो फाहशा की बात। Allah subhanahu wa ta'ala has told us to stop the doors that open into vulgarity or function. ठीक है? So hijab is basically a case in point. Our shares are basically a case in point. But आप देखें कि तशी अल फाहिशा के बाद सूरत अन-नूर आया 19 में आई। Then Prophet ﷺ says in this hadith from Musnad Ahmad, verily Allah does not love anyone vulgar and obscene. Inna Allah la yuhibbu kulla fahishim mutafahish. In Tirmidhi ki hadith, a true believer does not taunt or curse or abuse or talk indecently. So that is a kind of fahsha also. We need to be careful even about the things we forward. कई दफा उसमें short
फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सो ओके, LOL फाइन, फोमो ओके, बट देन देर आर दोज जो प्रॉब्लमैटिक हैं, उनमें फहशा है, उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज है, उसमें कोई ऐसी गाली है, उसमें कोई ऑब्ससेनिटी है, उसमें एक्सप्लेटिव है, एंड वी आर नॉट इवन थिंकिंग, वी आर फॉरवर्डिंग इट। तान, लान, फाहिश, बजी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती इसमें इस हदीस में, वैसे बेसिकली तो हम इसमें फहशा की बात कर रहे हैं, बट कर्स या अब्यूज उसमें ये भी है कि मसलन सूरत अल हजरात कहती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है? हम शेयर कर रहे हैं कि कोई गिर गया, you are making fun of. So I'm going to point out the things that are problematic. There is a lot of good that can be done through social media, but we need to have our guard on. Nobody is saying कि आप totally छोड़ दें, but हर चीज, and this is taqwa. And I think what we are not talking enough about is taqwa with my phone, तकवा ऑन मीडिया, तकवा ऑन सोशल मीडिया। हमने बैठ के बातें करें, हमने गीबत करना शुरू कर दिया, हमने कहा ओ दिस एक्ट्रेस शी डिड दिस, ओ देखो ये वो इतनी, यू डोंट नो दैट। हमने किसी की, इवन कोई मॉडल है, कोई एक्ट्रेस है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो ये गुनाह कर रहे हैं, हमने उस गुनाह को आगे भी फॉरवर्ड कर दिया। वी आर आंसरेबल फॉर दैट, कि हमने क्यों फॉरवर्ड किया, हमने कोई गुनाह की चीज दूसरों को क्यों दिखाई, जितने लोग मेरा वो शेयर देखेंगे, there's a problem. So we have to be careful. करना ही है ना हमने सोशल मीडिया यूज, बी क्रिएटिव, अपनी तस्वीरें डालने के बजाय डू समथिंग क्रिएटिव। अपनी पिक्चर्स भी हम डाल देते हैं, तो इमेजिन, अल्लाह ना करे, समथिंग हैपेंस टू अस टुडे एंड those pictures are there, things we leave behind can either be our sadqa jariya on the other side. तो हम क्या शेयर करते हैं, we have to be careful. आप सोचो, इवन जब हम फैमिली ग्रुप है ना, उसमें भी जो हम बातें कर रहे हैं, अब हम, अल्लाह हमें माफ करे, बहुत कोई बुरी चीज किसी के बारे में लिख रहे हैं और एकदम से टाइम आ गया बंदे का, पता थोड़ी है क्या, अब वो रह गया है। अब कोई मुझे याद करके रो रहा है और वो कह रहे हैं ओ वाह इसने ये लिखा था। केयरफुल माइंडफुल यूसेज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन माइंड, एंड देन क्या चीजें हम पसंद करते हैं, फिर ये होता है कि जो चीजें हम देखते भी रहते हैं, आपको ये पता है ना, जब मसलन आपने इंस्टा पे क्लिक किया, शेयरिंग तो चले बड़ा डायरेक्ट है, पर आपने कितनी दफा क्या चीज देखी है, वो नंबर ऑफ व्यूज बढ़े हैं, दैट मीन्स वो और ज्यादा ऊपर आ गया। एसईओ किसी को पता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक चीज होती है मीडिया में। तो जो चीजें लोग जिस पे जितना क्लिक करते हैं या ज्यादा देखते हैं, वो ज्यादा सबको नजर आएंगी, वो पुश आउट हो। हम जितना कोई चीज ज्यादा चुपके से, वो उसमें अम्मी को नहीं पता, हस्बैंड को नहीं पता, मुझे पता है सिर्फ मैं क्या देख रही हूँ, अल्लाह को पता। So we have to be careful with that. Very important part of usage of social media, seeking fame, showing off, riya. Linked with that is praise. So all of us show off different things. जरूरी नहीं हर एक अपनी खूबसूरती दिखा रहा हो। So maybe I want to show off how religious I am. Maybe I want to show off how beautiful I am. Maybe I want to show off how intelligent I am. क्वेश्चन मार्क एक अपने जहन में डाल लीजिए कि एक, इनमें इसमें कोई हराम चीज तो नहीं है, बी इससे किसी को या मुझे अगर फायदा हो रहा है तो शेयर करें, बट अदर देन दैट, सीकिंग फेम, शोइंग ऑफ, रिया। सो फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, कोई खूबसूरत चीज दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छा, बट अगर आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप चल रहे हैं, आप, इट्स काइंड ऑफ लीडिंग टू नार्सिसिज्म। वंस इन अ वाइल चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, सेलेक्ट लोगों से चलता है। यू ऑल्सो नो दैट देयर इज द वेरी रियल कॉन्सेप्ट ऑफ नजर, और आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे और कई दफा डर लगता है देख के, बिकॉज देयर स्मॉल चिल्ड्रन, उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं,
It's not somebody who has evil intent in mind, या कोई आपके लिए बुरा ही चाहता है जिसकी नजर लगेगी, किसी की भी नजर लग सकती है. So these are things that we need to be careful about. Prophet sallallahu alaihi wasallam said in this hadith in Tirmidhi, two hungry wolves roaming freely among a flock of sheep are less destructive to them than the greed of a man for wealth and high status are to his religion. So to show off something is a problem. And that is something that happens. Vanity होती है, likes हमें चाहिए होती हैं. फिर बहुत important है कि कई दफा किसी की अमानत है, कोई राज है, और वो हमने सोशल मीडिया के थ्रू किसी से शेयर कर लिया. As Surah Al-Anfal verse 27 says, "O believers, do not betray Allah and the Messenger, nor betray your trusts knowingly." There are these questions I have. ये सवाल आपके सामने WhatsApp on your WhatsApp में. मेरा WhatsApp पे चीजें forward करने का मकसद क्या है? This is a self-reflection question. What is my reason for forwarding things on WhatsApp? To share something useful, to show that I know a lot. अच्छा, पता है कई दफा स्टार्ट होता है फर्स्ट रीजन से, बट वो मिक्स हो जाता है. टू किल टाइम, टू फील रेलेवेंट यानी हम दिखाना चाहते हैं दैट मतलब मैं भी आज के जमाने की हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है, तुम सिर्फ तुम थोड़ी हो जिसे सब पता है. हाँ. Before forwarding anything on WhatsApp, which of the following things do I consider? अपने जवाब लिखो आप. Is this verified news or fake news? क्या ये मैं चेक करती हूँ? Have I tried to check whether this news is true? Have I even tried? अगर try के बावजूद गलती होगी कोई बात नहीं, try भी नहीं किया तो मसला. Will the person I'm sending this to want to receive this? आपको इस आखिरी चीज के लिए ये बताऊं कि सूरह नूर में आता है that when you go to somebody's place or for example you call someone, 3 दफा नॉकिंग की इजाजत है. ठीक है, 3 दफा के बाद ये कि that person doesn't want you, तो अभी आप छोड़ दें. सो फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर आपको कहा हुआ है कि इस टाइम के बाद मुझे मैसेज ना, या ये मेरे वर्क टाइम है, या ये मेरे स्लीप टाइम है, जो भी हो, सो चले मैसेज तो फिर भी आप कर दें बिकॉज वो उनकी चॉइस है कि वो उस वक्त अपना इंटरनेट ऑफ करते हैं. बट आपको एक अंदाजा हो जाता है कि अगला आपके ये फॉरवर्ड या मैसेजेस चाहता है या नहीं. कुछ चीजों से अंदाजा होता है, मसलन वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा. When I respond to someone's message on WhatsApp, do I write something using my mind or heart, or do I just use stickers, gifs or forwards? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ लिख नहीं रहे हैं और आप हर स्टिकर फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप दूसरे के फोन की मेमोरी खा रहे हैं, दूसरा आप अपनी इंटेलिजेंस का नो लॉन्गर इस्तेमाल कर रहे हैं, तीसरा आप कुछ सोच नहीं रहे हैं. मसलन आप वही फॉलो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं. अब लोगों ने लिखना शुरू किया आई लव यू टू द मून एंड बैक, आपने बगैर सोचे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. आप गई हैं चांद पे और आई हैं वापस. हमारे दीन में तो मजाक में भी. सो दिस इज इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हो रही है. आई होप कि आज की टॉक से एटलीस्ट हम थोड़ा सोचेंगे घर जाके इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.